Phenupamankayamimam viditva Marici dhammam abhisambudhano Chetvanamaras papuppakani Adasanam machurajas gacche Puppani heva pacinam tang Vyasatta manasang arang Suttangamang mahogho Machuadaya gacchati Puppani heva pacinam tang Vyasatta manasang arang Atitang yeva kamesu Antako kurute vasang Yathapi bhamaro puphang Vannagandhang ahetayang Paleti rasa madaya Evangami muni chare Napare sang vilomani Napare sang kata katang Attanova avikheya Katani akatani ca Yathapi ruchirang puphang Vannavantang agandhakang Evaṁ subhasitha vācā apalā hoti akuppato Yathapi ruciraṁ puphang vannavantang sugandhakaṁ Evaṁ subhasitha vācā sapalā hoti sakuppato Yathapi puphara simha Kairamala gune bahu Evaṁ jātena maccena Katambang kusalang bahum Napuppagandho pativatameti Na chandanam takara mallikāva Satanca gandho pativatameti Sabba disa sappuriso pavayati Chandanam tagarang vapi Uppalang athavasiki Ete sangandha jatanam Sīla gandho anuttaro Appamato ayam gandho Yāyam tagara chandanam Yocha sīla vatam gandho Vāti devesu uttamo Te sang sampanna sīlānam Appamāda viharinam Sammadanya vimutthanam Māro magganna vindati Yatha sankara dhanasmin Ujjitasmin mahapathe Padumang tatha jayeta Suchigandham manoramam Evaṁ sankhara bhutesu Andhabhute puthujjane Atirocati paññāya Samma sambuddha savako Sadhu, sadhu, sadhu
This is the air outside your house. Poonam, can you host now? Can you share? Sister Sangamita is supposed to start. I don't know, she's gone somewhere or something. Anyway. Namo Buddhai, Namo Dhammai, Namo Sanghai. भगवान बुद्ध के टीचिंग्स के इस कोर्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम मैं वेनरेबल सुमित से प्रार्थना करूंगी कि वो 5 प्रिसेप्ट्स दें और उसके उपरांत हम आज का कोर्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। साधु साधु साधु। Please keep your palms together close to your heart and say it 3 times. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu. Please say Namo Tassa Bhagavato Arahato 3 times to observe the 5 precepts. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang Saranang Gacchami. Buddham Saranang Gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Dhammam Saranang Gacchami. Sanghang Saranang Gacchami. Sangham Saranang Gacchami. Duteyang pe Buddhang Saranang Gacchami. Dutiyampi Buddham Saranang Gacchami. Duteyang pe Dhammang Saranang Gacchami. Dutiyampi Dhammam Saranang Gacchami. Duteyang pe Sanghang Saranang Gacchami. Dutiyampi Sangham Saranang Gacchami. Tateyang pe Buddhang Saranang Gacchami. Tatiyampi Buddham Saranang Gacchami. Tateyang pe Dhammang Saranang Gacchami. Tatiyampi Dhammam Saranang Gacchami. Tateyang pe Sanghang Saranang Gacchami. Tatiyampi Sangham Saranang Gacchami. Saranaгаmanang Sangpunnang. Am Bhante. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Kamesu Miccācara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu Miccācara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Musavada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musavada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Suramedaya Majjapama Dattana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Sura Meraya Majjapamadhathana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Isaranena Saddhiṃ Panchaseelang
Dhammang sadhukang surakitang katva appamadena sampade tabbang. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you, Venerable Bhante Ji, for administering the precepts. Do I have your permission to begin today's teaching? Please allow me to share screen. Yes, please. It is disabled, Bhante Ji. Yes, now it's okay. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Welcome, dear participants, meritorious Upasikas and Upasikas. Today's topic is the way to Nibbana. Waiting for the slide to load and start. Yeah, it's working. No, Bhante Ji, not here. It's not started yet. Yeah, now it is okay. So we are in Fundamentals of Buddhism. Now we are going to start the topic, the way to Nibbana. About Nibbana, it has been said in Buddhist canonical texts, Nibbanam Paramam Sukham. Nibbana is the highest bliss. Without doubt, this is the goal, the ultimate objective of every Buddhist. Even non-Buddhists are very curious about this term. What exactly does it mean? In the Dhammapada, it has been said, transient are all conditioned things. Sorrowful are all conditioned things. Soulless are all conditioned and non-conditioned. This means that our very existence is full of dukkha because it is impermanent, because of the defilements that we have inside us. The Dhammapada also states that Nibbana is bliss supreme. Let's take a look at a spiritual pilgrim's path to Nibbana. जब हम बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट के रूप में करें, चाहे एक नॉन बुद्धिस्ट के रूप में करें, क्योंकि जैसा हम पहले बता चुके हैं, बुद्धिज्म is both a religion for those who are born into it, and it is also a philosophy of life, जो इसको अपनाना चाहते हैं. तो जो भी इस पाथ पे चलता है, और पाथ क्या है? पाथ is the four noble truths and the noble eightfold path. That is the central conception of Buddhism. तो वो तो हमारा बैकग्राउंड, हमारी फाउंडेशन हो गई. अब इसके आगे चलते हैं. तो जो भी इस पाथ पे चलता है उसको हम एक स्पिरिचुअल पिलग्रिम कहते हैं. तो इसमें क्या हमने देखना है? निब्बाना, द वे टू निब्बाना एंड द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स. निब्बाना के विषय में हम जो स्टडी करेंगे वो है डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, वेयर इज निब्बाना, व्हाट अटेन्स निब्बाना, इटर्नलिज्म, अनिहिलेशनलिज्म, द वे टू निब्बाना. और वे टू निब्बाना में आता है द मिडिल पाथ, जिसकी 3 डिविजन्स हैं. 1 सील, 2 समाधि, 3 पन्या. After that we will see the 3 characteristics, anicca, dukkha, anatta. What is Nibbana? It is the summum bonum of Buddhism. Summum bonum phrase बहुत important है समझना. It means the highest good, especially as the ultimate goal, according to which values and priorities are established in an ethical system. Ethical system यानी कि सील या moral conduct ही या बुद्धिस्ट एथिक्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म के पाथ पे चलने के लिए. और एक बुद्धिस्ट का पूरा जीवन इसी के अराउंड होता है. यही हमारी वैल्यूज होनी चाहिए और यही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए. इसीलिए इसको कहते हैं summum bonum. It is a Latin expression. It denotes the fundamental principle on which some system of ethics is based. That is the aim of actions, which
if consistently pursued, will lead to the best possible life. और बौद्ध धर्म को फॉलो करके जो शांति, जो प्रॉस्पेरिटी, जो सुख मिलता है, वो और किसी तरीके से नहीं मिलता है. What is Nibbana? Comprehension of Nibbana is impossible by mere perusal of books. केवल किताबें पढ़ने से नहीं समझ में आता है. We have to follow the noble path also. It is a supramundane state, lokuttar dhamma, to be realized by intellect alone, only by intuitive system. तो इंटेलेक्ट तो चाहिए ही, विजडम पन्या तो चाहिए ही है इसको समझने के लिए, और इंट्यूटिव विजडम, इनसाइट से हम इसको समझ सकते हैं कि हम कब निब्बान की स्टेट में हैं. A purely intellectual comprehension of Nibbana is impossible because it is not a matter to be arrived at by logical reasoning. अत्तका वचर, अगर हम केवल विचार करते रहे, लॉजिकली समझते रहे कि निब्बान क्या है, तो इस तरीके से पूरी तरह समझ में नहीं आएगा. The words of the Buddha are perfectly logical. बौद्ध धर्म में पाली कैनन में किसी प्रकार के कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है. But Nibbana, the ultimate goal of Buddhism, is beyond the scope of logic. What exactly is it? Nevertheless, by reflecting on the positive and negative aspects of life, हमारे जीवन में जो दुख और सुख हैं, the logical conclusion emerges that in contradistinction to a conditioned phenomenal existence, एक तरफ तो हमारी एग्जिस्टेंस है जिसमें जीवन में कुछ ना कुछ फिनोमेना घटना होती रहती है, और हमारा सुख दुख हमारे हाथ में कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि कुछ कंडीशंस, बाहरी कंडीशंस पर डिपेंडेंट होता है. जैसे कि हम दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, उसके साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, वो हमारे लिए कुछ करेगा तब हमें सुख या दुख मिलेगा. There must exist a sorrowless, deathless, non-conditioned state. जब भगवान बुद्ध और अन्य अरहंत बुद्धास इतनी बात करते रहे हैं निब्बान की और दुख की, तो लॉजिकल है इसको समझना कि जब दुख भरे जीवन की बात हो रही है, तो डेफिनेटली कोई ऐसा जीवन भी होगा जिसमें दुख नहीं है, जिसको निब्बान कहा गया है. Definition of Nibbana. The Pali word Nibbana comes, and there's another word, Sanskrit में जिसको निर्वाण कहते हैं, is composed of ni and vana. Ni is a negative particle, negation है, and vana means weaving or craving. This craving serves as a cord, एक rope या रस्सी की तरह है, to connect one life with another. तो जब कोई रस्सी या कॉर्ड नहीं है हमें इस जीवन से बांधने के लिए, तब हमें निब्बान मिलता है. And the fact is that Nibbana is more commonly and famously known by its Sanskrit term Nirvana. It is called Nibbana in that it is a departure. Departure matlab ni. From that craving which is called vana or lusting. And this definition has been given by the Abhidhamma Sangha, which is a part of the Abhidhamma Pitaka. As long as one is bound up by craving or attachment, one accumulates fresh karmic activities. एक जीवन से दूसरे जीवन में rebirth after rebirth इस संसार में wandering तब तक होती है जब तक हमारे अंदर एक craving हो, attachment हो इस life के साथ. यानी कि ये हमारे हाथ में है कि एक तो इसी जीवन में हम निब्बान हासिल कर ले, निब्बान here and now, sorrow से छुटकारा मिल जाए, और दूसरा है कि फर्दर रीबर्थ ना हो. बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जीवन के घटनाओं को, फिनोमेना को बिल्कुल बोझ समझते हैं, न्यूसेंस समझते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है, क्यों ना हमेशा के लिए इससे छुटकारा मिल जाए. जिनके जीवन में दुख नहीं है, अच्छा जीवन है, प्रॉस्परस लाइफ है, वो भी अक्सर ये चाहते हैं कि रीबर्थ ना हो, एक ही जीवन काफी था, दैट वाज मोर देन इनफ. सो वी accumulate fresh karmic activities. हमारे कम की वजह से ही रीबर्थ होता है. कम हमारी एक्शंस जो हैं ये या तो होलसम होती हैं, कुशल, या अनहोलसम होती हैं, यानी कि अकुशल. And this is Buddhism's famous theory of karma, which we shall be studying in month 3. And all this must materialize in one form or other in the eternal cycle of birth and death.
तो ये इटर्नल साइकिल है हमारी क्रेविंग और अटैचमेंट की वजह से। हमें जो शौक है इस जीवन में ये, चलो अगले जीवन में कुछ और कर लेंगे। When all forms of craving are eradicated, reproductive karmic forces जो reproduce करता है, एक के बाद एक births हमारी होती जाती हैं, they cease to operate and one attains nibbana, escaping the cycle of birth and death. हम जिन 5 aggregates of clinging से बने हैं, उन्हीं के अंदर ये कमिक एक्टिविटीज को, कमिक फोर्सेस या कमिक एक्टिविटी स्टोर है, ये समझ ले सकते हैं एक सिंपल वे में, और इन्हीं के कारण हमारे कंटिन्यूअस रिबर्थ्स होती हैं। लेकिन जब हम क्रेविंग या लस्ट अटैचमेंट को खत्म कर देते हैं तो ये जो क्लिंगिंग एग्रीगेट्स हैं ये ब्रेकअप कर जाती हैं, इरेडिकेट हो जाती हैं और फर्दर रिबर्थ नहीं होता। The Buddhist conception of deliverance is escape from the ever recurring cycle of life and death. हमेशा के लिए लाइफ एंड डेथ खत्म हो जाए, and not merely an escape from sin and hell. बिगनिंग में मैंने थोड़ा सा बताया था कि दूसरे रिलीजन्स जैसे हिंदुइज्म है, इस्लाम है और क्रिश्चियनिटी है, वो बिलीव करते हैं एक आत्मा, एक सोल, एक रूम है, जिसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो एक सॉलिड बॉडी है, एक बॉल की तरह, एक गेंद की तरह, और जब वो लाइफ गिविंग सब्सटेंस या फोर्स हमारे अंदर आता है, इस ह्यूमन फिजिकल बॉडी के अंदर आता है, तो हम जीने लगते हैं, हमारी एग्जिस्टेंस होती है। लेकिन बौद्ध धर्म ये मानता है कि ये कोई एक सॉलिड एंटिटी नहीं है जिसको हम आई या पर्सन कहते हैं, जो एक बर्थ से दूसरे बर्थ में ट्रांसफर होती है, बल्कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 क्लिंगिंग एग्रीगेट्स जो एक कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ फ्लक्स में ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं, ये हम समझ सकते हैं। तो इससे डिलीवरेंस पाने का तरीका जो है वो है कि हम क्रेविंग और अटैचमेंट छोड़ दें, और डिलीवरेंस जब मिल जाती है तो हम उसको कहते हैं निब्बान। निब्बान की एक एक्सप्लेनेशन और भी है, that it is the extinction of the fire of lust, लोभ, hatred, dosa and delusion, मोह। ये 3 रूट्स हैं, ये जड़ें हैं जिनके कारण हमारे अनहोलसम एक्टिविटीज होती हैं, और ये एक आग, एक फायर की तरह है। इसीलिए निब्बान को हम ये भी कहते हैं कि इट इज द एक्सटिंग्विशमेंट। इंग्लिश लैंग्वेज में फायर को जब पुट आउट करते हैं, आग को जब बुझाते हैं, तो वी यूज द वर्ड टू एक्सटिंग्विश। The whole world is in flames, says the Buddha. By what fire is it kindled? ये आग कैसे प्रज्वलित होती है? By the fire of lust, hatred and delusion. तो ये 3 unwholesome roots हैं, अकुशल मूल या जड़ें हैं। By the fire of birth, old age, death, sorrow, lamentation, pain, grief and despair is it kindled. तो ये सब अवस्थाएं और ये सब स्टेट्स, ये जो धम्मा या फिनोमेनास हैं, ये तो सबके जीवन में होते ही होते हैं। We cannot escape from it because everything is impermanent. प्रत्येक फिनोमेना इम्पर्मानेंट है, प्रत्येक पर्सन जो ह्यूमन बीइंग, सेंटिएंट बीइंग हमारे जीवन में आता है वो भी इम्पर्मानेंट है। जो आ रहा है वो तो जाएगा ही जाएगा, इसलिए ये सब तो हमें भोगना ही पड़ेगा। और जब तक हम स्वयं ना चाहें कि हमें डिलीवरेंस चाहिए, जब तक हम कोई कम ना करें इससे डिलीवरेंस का, तब तक हमें संसार में घूमते रहेंगे। The extinction of the flames is the means of attaining Nibbana. जब हम अपने आप में संयम पा लेते हैं, क्रेविंग और अटैचमेंट को समाप्त कर देते हैं, तभी हमारे अंदर एक कामिक फोर्सेस समाप्त हो पाती हैं और फर्दर रीबर्थ नहीं होता है। I have said that we can attain Nibbana, or I can attain Nibbana, or you can attain Nibbana. Now, I am a person and you are a person, हम sentient beings हैं, but what exactly is this person in Buddhism? What attains Nibbana? Buddhism denies the existence of a permanent entity or an immortal soul. आत्मा, रूह या सोल में हम विश्वास नहीं करते। बौद्ध धर्म की टीचिंग कुछ और है, 5 clinging aggregates की टीचिंग है ये। The so-called being, or which we often hear as the vestment of the soul, vestment मतलब एक कंटेनर जिसके अंदर सोल है या आत्मा है, is a mere bundle of conditioned factors. ये 5 clinging aggregates हैं जो कई factors से संबंधित हैं, interconnected हैं, और इन्हीं के कारण हम जी रहे हैं। तो एक एक करके अगर हम factors को कंट्रोल कर लें, unwholesome factors को अपने अंदर से निकाल दें, तो हम निब्बान हासिल कर सकते हैं। And this is what will attain Nibbana.
The Arahant Bhikkhuni Bajira says, Venerable Bajira ने कहा था, and just as when the parts are rightly set, the word chariot ariseth in our minds, so doth our usage covenant to say a being when the aggregates are there. This is according to the kindred saying Samyutta Nikaya part 1. Venerable Bhikkhuni ने कहा था कि जब कई parts एक साथ properly set हो जाते हैं, दूसरे से जोड़ दिए जाते हैं, तो हम कहते हैं कि एक chariot या एक रथ है, वो भूमिका हमारे माइंड में अराइज करती है। उसी तरीके से जब ये 5 एग्रीगेट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तब एक सेंटिएंट बीइंग बनता है। 5 aggregates are called the Panchakhanda. The Buddha taught that the human being is made up of 5 aggregates. Panchakhanda, ये हम कर चुके हैं। Nama, feeling, perception, mental formations, consciousness, and Rupa, that is matter. So what attains Nibbana? According to Buddhism, the so-called being, ये जो sentient being है, मैं हूँ, आप हैं, consists of mind and matter, Nama Rupa, which constantly change with lightning rapidity. इतने ज्यादा चेंजेस होते हैं कि कुछ भी स्थिर नहीं होता। एक तो ये अनिश्चितता दिखाता है, इम्पर्मनेंस दिखाता है। दूसरी बात ये कि जब ये सॉलिड नहीं है, फ्लो है, एक स्ट्रीम है, तो बदलता रहता है, तो हम अपने आप को बदल सकते हैं। Apart from these two composite factors, there exists no permanent soul or an unchanging entity. The so-called I is also an illusion. इसलिए ये जो हमारी लाइफ है, हमारे अंदर जो लाइफ फोर्स है, ये 5 क्लिंगिंग एग्रीगेट्स का पंचखंड का फोर्स है, और इसके अतिरिक्त कोई आई नहीं है। तो पंचखंड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये सॉलिड नहीं है। तो हमारी जो भी कंसेप्शन है अपने सेल्फ के बारे में, तो वो भी चेंज हो सकती है और कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। What attains Nibbana? Instead of an eternal soul और an illusory I, illusion है, ये माया है कि ये कोई I है। बुद्धिज्म possess, बुद्धिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक डायनामिक लाइफ फ्लक्स है, संतति, which flows ad infinitum, endlessly, गोल गोल चक्कर जैसे फ्लक्स में रहता है। इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म में आपने देखा होगा, फोर्स की लाइंस हैं, उसी तरीके से ये गोल गोल चक्कर खाता है, as long as it is fed with ignorance and craving. और कारण क्या है ये गोल गोल चक्कर का, इस फ्लक्स का? इग्नोरेंस और क्रेविंग। हमारे कम की फोर्सेस, अगर हमारा कम इग्नोरेंस का है, क्रेविंग का है, तो ये जो आई है, जो 5 क्लिंगिंग एग्रीगेट्स पंचखंड हैं, ये एग्जिस्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे और गोल गोल घूमते रहेंगे। When these two root causes of ignorance and craving are eradicated by any individual on attaining arahantship, they cease to flow with his final death. तो डेथ पे जब हमारी फिजिकल डेथ होती है, इस बॉडी की डिकेइंग, रॉटिंग, डिकम्पोजिशन, फाइनल डेथ हो जाती है, तो ये समाप्त हो जाते हैं और नेक्स्ट रीबर्थ, नेक्स्ट सेंटिएंट बीइंग जन्म नहीं लेता है। तो 5 एग्रीगेट्स पंचखंड में देखिए, नाम और रूपा है। नाम में है सेंसेशन और फीलिंग, कॉल्ड वेदना इन पाली। परसेप्शन इज संज्ञा इन पाली। मेंटल फॉर्मेशंस इज संखारा इन पाली, एंड कॉन्शियसनेस इज विज्ञान इन पाली। मैटर या रूपा, जो भी सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी मैटर है, उसमें आते हैं एलिमेंट ऑफ एक्सटेंशन, दैट इज अर्थ, पृथ्वी धातु, एलिमेंट ऑफ कोहेशन, वाटर, आपो धातु, element of heat, that is tejo dhatu, and element of motion या wind या force, वायु धातु। इन सब की डिटेल्स अभिधम्म में पढ़ाई जाती है। The Visuddhimagga by Most Venerable Buddha Ghosh, translated as the path of purification, states, misery only doth exist, none miserable. कोई पर्सन एज सच नहीं है। ये तो 5 क्लिंगिंग एग्रीगेट्स, ये 5 फोर्सेस हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं, इन 5 उंगलियों की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्लिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से चिपक रहे हैं। कोई एक पर्सन नहीं है, तो मिजरी तो है ही, सुख दुख तो है ही। जब तक ये 5 एग्रीगेट्स हैं एग्जिस्टेंस में, तब तक दुख है, लेकिन नन मिजरेबल, कोई पर्सन, ह्यूमन बीइंग एज सच नहीं है जो मिजरेबल है। नॉट डूअर इज देयर, नॉट सेव द डीड इज फाउंड। जो कम या डीड किया जाता है वो तो प्रत्यक्ष है, वो तो दिख रहा है सबको, लेकिन उसको कोई करने वाला एज अ पर्सन, एज एन एंटिटी नहीं है। निब्बाना इज
तो वेनरेबल बुद्ध घोष ने भी कहा कि निब्बान डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जब हम दुख की बात करते हैं तो सुख भी कुछ होगा, क्योंकि उसको कॉन्ट्रा डिस्टिंक्शन है, उसके ऑपोजिशन में इसको कंट्रास्ट करके ही तो हम कह रहे हैं कि ये दुख है. दुख कंपेयर टू व्हाट? हाउ कैन वी से दैट दिस धम्मा, दिस फिनोमेना इज दुख? क्योंकि कोई और स्टेट हमने महसूस की है, एक्सपीरियंस की है, जिसको हम सुख कहते थे. Therefore, जब दुख है तो दुख का छुटकारा भी लॉजिकली होगा ही, तो दैट इज निब्बान, बट नॉट द मैन हु सीक्स इट. एक ह्यूमन बीइंग, एक सेंटिएंट बीइंग निब्बान को नहीं प्राप्त कर सकता, नहीं को ढूंढ सकता. जिसको हम मैन कहते हैं, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एग्रीगेट्स, नामा एंड रूपा. तो नामा एंड रूपा के कॉन्सेप्ट को ही समझना है, नामा रूपा के कॉन्टेक्स्ट में ही, उसी संदर्भ में हमें निब्बान हासिल करने की सोचना है. द पाथ एग्जिस्ट्स, नोबल ट्रूथ्स हैं, उसको जान के 8 नोबल पाथ पे चलना है. पाथ तो एग्जिस्ट करता है, हम निब्बान तक कैसे पहुंचे, बट नॉट द ट्रैवलर ऑन इट. लेकिन जो ट्रैवलर है, जो स्पिरिचुअल पिलग्रिम है, बौद्ध धर्म के अनुयायी जो हैं, वो सेंटिएंट बीइंग सेंस है, जिसमें 5 क्लिंगिंग एग्रीगेट्स, पंचखंड की सेंस है. That traveler, that pilgrim is not a person in the sense of other religions. यानी कि कोई सॉलिडिटी नहीं है हमारे अंदर कि हम कभी बदल नहीं सकते. हम बदल सकते हैं अपने आप को. इसलिए बौद्ध धर्म को फॉलो करने को कहते हैं the practice of Dhamma. This is the reason why Buddhism can neither be called eternalism, कि हमारे अंदर जो लाइफ फोर्स है वो इटर्नल है, एक सॉलिड बॉल है. ये मेरे हाथ में एक सॉलिड सर्कल है जो एक जन्म से दूसरे जन्म रीबर्थ लेता है, एज इट इज रहता है, ऐसी बात नहीं. नॉट निहिलिज्म. निहिलिज्म मतलब कुछ नहीं है, कि जब हमारे डेथ हो जाती है तो ये जो सॉलिड बॉल है ये एकदम ब्रेक कर जाता है, खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं. ये जो 5 क्लिंगिंग एग्रीगेट्स हैं, इसको हम अभिधम्म में स्टडी करते हैं, चित्ता और चेतसिका. कुछ पास ऑन होते हैं नेक्स्ट लाइफ में, कुछ नहीं पास ऑन होते हैं. तो कुछ बातें हमारी पास ऑन होती हैं नेक्स्ट जनरेशन में, और there is always the possibility, there is always the opportunity to learn something new. तो हमेशा कम हमारे हाथ में है कि हम अनहोलसम, अकुशल को त्याग दें और कुशल होलसम को अपनाएं. Eternalism क्या है? It is a kind of thinking which was rejected by the Buddha in the Nikayas and the Agams. Chinese sutras में जो commentaries हैं, sutras हैं, उनको agams कहते हैं. It is the belief that the individual has an unchanging self, एक solid self है. Views of this kind were held at the Buddha's time by a variety of groups. तो समय ये बहुत फैशन था या रिवाज था, इंटेलेक्चुअल से, फिलोसोफर्स से इसी तरह की बातें करते थे. तो जब हम सुता स्टडी करते हैं तो we always see that the Buddha, the Supreme Buddha, has consistently mocked and rejected कि ये सब waste of time है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए. Annihilationism का व्यू है, the Buddha rejected the opposite concept of Uchedavad, annihilationism. He proposed a middle way, Majjhima Patipada, between these extremes, relying on causality. कुछ causes हैं जिसके वजह से, जिसके कारण ये पंचखंड किसी फॉर्म में, किसी पार्ट में पास ऑन होते हैं, और कुछ causes हैं जिसके कारण ये खत्म हो जाते हैं, annihilate हो जाते हैं. तो कुछ पास ऑन होते हैं, कुछ नहीं होते. This is the middle way of the Buddha. Annihilationism is also known as extinctionism or destructionism. That whatever we are made up of becomes extinct, समाप्त हो जाता है. जैसे कोई स्पीशीज जानवर की extinct हो जाती है, it is no longer found on earth, उसी प्रकार वो भी समाप्त हो जाता है, या पूरी तरह डिस्ट्रक्शन हो जाती है उसकी. अब इस कैंडल को देखिए, ये बुझ गई है और इसमें से बस धुआं निकल रहा है. It is the belief that those who are wicked will perish or cease to exist. It states that after the final judgment, all unsaved human beings will be totally destroyed so as not to exist. यानी कि जो sin पाप करते हैं वो hell जाएंगे, नरक जाएंगे. Final judgment वहां होगी, और that their consciousness will be extinguished rather than suffer everlasting torment in hell. वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे, extinct हो जाएंगे, जैसे कि इस कैंडल की flame extinct हो गई है. Although Nibbana cannot be perceived by the 5 senses and lies in obscurity insofar as the average man is concerned, the only straight path
that leads to Nibbana has been explained by the Buddha with all the necessary details, and it is laid open to all. See this picture, please. The goal is now clouded, but the method of achievement is perfectly clear. And when that achievement is realized, the goal is as clear as the moon freed from clouds. जब चंद्रमा के सामने से बादल हट जाते हैं और चांद की चांदनी बहुत स्पष्ट हो जाती है, उज्जवल, निर्मल, स्वच्छ हो जाती है, उसी प्रकार ये गोल भी है, like the moon freed from clouds. तो जब हम अपनी डिफाइलमेंट्स, अपनी बुराइयां दूर कर देते हैं, तभी हम निब्बान को प्राप्त कर सकते हैं और तभी निब्बान को समझ सकते हैं. Where is निब्बान? आखिर ये कहाँ पे है? In the Rohita Sutta, the Buddha states, in this very 1 fathom long body, along with its perceptions and thoughts, do I proclaim the world, the origin of the world, the cessation of the world, and the path leading to the cessation of the world. निब्बान को चाहे हम end of physical life समझें, चाहे हम इसी जीवन में निब्बान हासिल करें, लेकिन सच यही है. Buddhism is a religion for people who believe in taking control of their lives or being responsible for their actions. कोई दर्शन नहीं देगा हमें इससे छुटकारा पाने के लिए. The Buddhas, the Arahants, the Sangha has shown us the path. लेकिन इस पाथ पे हमें ही चलना है. We have to walk on this path. In the millionth Panha, that is the questions of King Malind, the Venerable Nagasen Bhanteji answers this question thus. उन्होंने जवाब दिया है, there is no spot looking east, south, west or north, above or below or beyond where Nibbana is situated. कोई एक जगह, कोई एक स्थान नहीं है. And yet Nibbana is. लेकिन निश्चित रूप से निब्बान है. And he who orders his life aright, जो अपने जीवन को व्यवस्थित करता है सही तरीके से. Grounded in virtue and with rational attention. समझदारी, rationality से जो mindful होता है, सचेत रहता है, और virtue seal में grounded होता है. May realize it, कि वही प्राप्त कर सकता है. Whether he lives in Greece, China, Alexandria or in Kosal. कहीं पर भी, चाहे बुद्धिज्म को हम रिलीजन कहें, चाहे पाथ या फिलॉसफी ऑफ लाइफ कहें, यही रास्ता है, that is seal and mindfulness. Nibbana is therefore not a kind of heaven, ये स्वर्ग नहीं है, where a transcendental ego resides. हम इन सब से ऊपर उठ के बड़े होली और प्योर और पवित्र बन के जहाँ रह सकें, ऐसा नहीं है. But a Dhamma, an attainment which is within the reach of us all. An eternal heaven which provides all forms of pleasures desired by man. जहाँ पे बस सुखी सुखे और बहुत सुंदर चीजें हैं. एक गार्डन जहाँ पे सूरज हमेशा चमकता है, फूल हमेशा खिले रहते हैं, चिड़िया हमेशा चहकती रहती हैं, ऐसा कोई हेवन नहीं है. And where one enjoys happiness to one's heart's content, सदैव सुखी सुख होता है, is practically inconceivable. ऐसा नहीं है. Granting that there is no place where Nibbana is stored, अब ये कोई स्थान नहीं है. King Milind questions Venerable Nagasen whether there is any basis whereon a man stand and ordering his life aright realize Nibbana. तो राजा मिलिंद ने Venerable Nagasen से ये प्रश्न किया था कि किस बेसिस पर हम खड़े हों. हमारी फाउंडेशन, हमारे जीवन की फाउंडेशन क्या होनी चाहिए, हम अपने जीवन को कैसे सही तरीके से ऑर्डर या सुव्यवस्थित करें जिससे कि हम निब्बान को अटेन कर सकें. This is taken from Questions of King Milind, बहुत ही मशहूर पुस्तक है. Yes, O King, there is such a basis. Which then, Venerable Nagasen, is that basis? Virtue, O King, is that basis. Virtue is seal, morality, moral conduct, ethics. For if grounded in virtue and careful in attention, ध्यान देना, mindfulness, meditation इसीलिए meditation के लिए इसलिए कहा जाता है, it is the heart or the essence of Buddhism. So virtue, O King, is that basis. For if grounded in virtue and careful in attention, whether in the land of the Scythians or the Greeks, whether in China or in Tartary, whether in Alexandria or in Nikamba, whether in Banaras or in Kosala, whether in Kashmir or in Gandhara, whether on a mountain top or in the highest heavens, wherever he may be,
The man who orders his life aright will attain Nibbana. The way to Nibbana, Part 1, Morality. The middle path leads to tranquility, realization, enlightenment, and Nibbana. This is according to the Dhammacakka Sutta. The way to Nibbana is the middle path. इसको मध्यमा पटिपदा भी कहते हैं, which avoids the extreme of self-mortification, अपने आप को बहुत कष्ट देकर कुछ हासिल करना, that weakens the intellect, क्योंकि इससे माइंड कमजोर हो जाता है और हम जीवन को संभाल नहीं पाते हैं. And the extreme of self-indulgence, अपनी हर खुशी, अपनी हर चाहत को पूरा करना, that retards mental progress, क्योंकि उससे moral principles develop नहीं हो पाते हैं. The middle path consists of the following 8 factors: right understanding, right thoughts, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. So this is the Noble Eightfold Path, in which we have the division of wisdom, the division of ethical conduct, and the division of mental discipline. तो ये जो wheel आप देख रहे हैं, this is a famous Buddhist symbol. These 3 stages are embodied in the beautiful ancient verse. Sabba papa sakaranam, kusalasa upasampada, sacheta pariyodapanam, etam buddhana sasanam. To cease from all evil, to cultivate good, to purify one's mind. This is the advice of all the Buddhas. Sister Arpana ने कुछ दिन पहले धम्म पालन गाथा ये कही थी, वही verse है. The way to Nibbana, first था morality, second है meditation. इसको कहते हैं concentration या समाधि. Securing a firm footing on the ground of morality, the aspirant then embarks upon the higher practice of samadhi. तो पहले morals होने चाहिए, उसके बाद समाधि या concentration. The control and purification of the mind, the second stage of the path of purity. Samadhi का मतलब है one pointedness of the mind, और ये है concentration of the mind on one object to the entire exclusion of all else. इसलिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस कहा जाता है. उसी प्रैक्टिस को फिर हम अपने जीवन में डेली लाइफ में किसी भी सिचुएशन में अप्लाई करते हैं. According to Buddhism, there are 40 subjects of meditation, जिनको कहते हैं कमट्ठान, which differ according to the temperaments of individuals. तो जैसे हमें सूट करे वैसे हम मेडिटेशन कर सकते हैं, बस करनी जरूर चाहिए. Suitability of subjects for different temperaments, ये important है. 3 है purity of vision. इसमें सबसे important है insight, विपස්සना. विपස්සना मेडिटेशन से ही हमारी विजन प्योर होती है. जब हम अपनी एक एक बात को समझते हैं, जानते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने आप पे और अपने हमारे अंदर जो भी उठ रहा है, अराइज कर रहा है, सबसाइड कर रहा है, उसको स्टडी करते हैं, तब हम अपने आप को जान लेते हैं और अपने आप को समझकर अपने आप को सही जगह पे कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छी बातों को अप्लाई कर सकते हैं. तो इंसाइट या विपස්සना का ऑब्जेक्टिव क्या है? इन ऑर्डर टू सी थिंग्स एज दे रियली आर, यथा भूत ज्ञान, as they really are, उसकी knowledge होना. It is insight, panya, the third and final stage that enables the aspirant to sainthood to eradicate wholly the defilements inhibited by samadhi. Samadhi या concentration से जो defilements, जो बुराइयां हैं, वो control में रहती हैं, लेकिन wisdom या विपස්සना से हम उसको पूरी तरीके से हटा सकते हैं. क्योंकि अगर एक भी defilement रह गई तो कमिक फोर्स बन के वो हमें रीबर्थ देगी, दूसरा जन्म मिलेगा और फिर हम इसी संसार में भटकते रहेंगे. With a one-pointed mind, he analyzes and examines this so-called we, यानी कि हम स्वयं को एनालाइज करते हैं. This searching examination shows what he has called I, जिसको हम I कहते हैं, मैं ऐसी हूँ, पर्सनालिटी मेरी ये है. ये सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है माइंड एंड मैटर का, नाम एंड रूपा, which are in a state of constant flux, arise करता है, सबसाइड करता है. बहुत ही चंचलता है इसमें. तो जब इतने चेंजेस होते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, तो हम अपने आप को बदल सकते हैं. Thereupon, इसके बाद एक साधक क्या या उपासक क्या करता है? He contemplates the truth that all conditioned things are transient, anicca, subject to suffering, dukkha, and devoid of an immortal soul, anatta.
dukkha, anicca, anatta. He realizes that life is a mere flux, conditioned by internal and external causes. जो भी घटना होती है, कुछ के लिए तो बाहर के लोग जिम्मेदार हैं और कुछ के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ. Nowhere does he find any genuine happiness, for everything is fleeting. तो अगर ये एटीट्यूड हो माइंड में, तो हम जीवन की हर घटना को आसानी से हैंडल कर सकते हैं. Because that's what religion is eventually, how to live life. These are called the 3 marks of existence. They summarize the changing nature of reality. So the 3 marks of existence are, first is anatta, which means no self. There is no ultimate reality or essence. Anicca means impermanence. People are constantly changing. And the third is dukkha, which means suffering, the natural result of anatta and anicca. The 3 marks are, ये हमने देखा, sabbe sankhara anicca. All sankharas, conditioned things, are impermanent. Sabbe sankhara dukkha. All sankharas are unsatisfactory. Sabbe dhamma anatta. All dharmas, conditioned or unconditioned things or phenomena, are not self. So the human condition is that we have the 3 universal truths, the Tilakkana, the 3 marks of conditioned existence: anicca, impermanence; anatta, no self; dukkha, suffering, unsatisfactoriness. संसार का क्या डेफिनेशन है? तिलक्षण है संसार में. The cycle of birth, death and rebirth को संसार कहते हैं. It is the wheel of life. Release from samsara is possible by following the noble eightfold path. The state of dependent origination, एक फैक्टर पे डिपेंड करके कुछ और ओरिजिनेट करता है. The aim is to live in such a way as to ensure a better rebirth, especially for lay Buddhists. ये several realms of existence, 31 planes of existence हैं, जैसे मनुष्य है, पेताज हैं, देवा realms हैं, animals का है, असुरों का है. Rebirth depends on karma, a flow of ever-changing consciousness. Chittas and chetasikas हैं ये, 6 states of existence, all dependent on karma. First mark is anicca or impermanence. The first key concept you need to know is anicca. It means impermanence. It is the first universal truth, meaning that everything is constantly changing. Nothing stays the same, nothing is permanent. Everything is changing around you just now, whether light, table, chair, apple, benachi, everything. This applies to relationships and conditions as well. And there's a story of the nun, the Bhikkhuni Kissa Gautami, the mustard seed story, which I shall come to later. The second mark is anatta or no soul. This is the second universal truth. It is basically anicca applied to people. If nothing is permanent and everything changes, then you also constantly change. There is no permanent thing, so there can be no eternal, lasting soul or self. Buddhists believe that we are made up of life-changing bits. The छोटे-छोटे parts are called aggregates or the 5 skandhas. The skandhas constantly change, so we are constantly changing. The only thing that stays the same is our label. And we have the questions of King Milind and the famous chariot story, which you can Google and look up. Venerable Thich Nhat Hanh has said, "It is not impermanence that makes us suffer. What makes us suffer is wanting things to be permanent when they are not." So this is a universal truth that we have to understand. The 3 marks are a central theme in the Buddhist 4 Noble Truths and the Noble Eightfold Path. According to Venerable Thich Nhat Hanh, the 3 seals are impermanence, non-self, and nirvana. He says in his book, The Heart of the Buddha's Teaching that, and I quote Venerable, in several sutras, the Buddha taught that nirvana, the joy of completely extinguishing our ideas and concepts, rather than suffering, is one of the 3 dharma seeds. Venerable Pema Chodron has said, impermanence is a principle of harmony. When we don't struggle against it, then we are in harmony with reality. The third mark is dukkha, unsatisfactoriness. It means suffering also. The usual interpretation of dukkha is more, but it is more than that. It is the dissatisfaction with life, the good and bad, the fact that things change,
things failing to live up to our expectations, etc. 3 types of suffering: ordinary suffering, suffering from change, and from conditioned states. Human failure to understand anicca means that we have a misunderstanding of a human condition and live our lives wrongly, so we suffer. Therefore, we should follow the noble eightfold path. दुख का और भी कुछ मतलब है, not accepting that everything changes. We expect and hope for things to stay in the same when they are good. We worry they'll never change when they are bad. We strive to achieve goals that are ultimately meaningless, so we are ignorant to the truth of the world. We are tied to the reality of samsara, the cycle of life, death, and rebirth. एक rope की तरह हम tied हैं because of a failure to understand the fact that not accepting anicca leads to dukkha, which in turn stops us becoming enlightened. ये हमारी बोधि प्राप्ति enlightenment के रास्ते में एक obstruction है, एक hurdle है, and therefore keeps us tied to samsara. तो हम 3 mental poisons, 3 accursorial roots से tied हैं: greed, hatred, and ignorance, which keep this cycle going. Ignorance is delusion or moha. Understanding anicca and dissolving the 3 poisons is the key to ridding ourselves of dukkha and becoming enlightened. और धम्मपद में verses 147 से 156 तक इस विषय में दिया हुआ aging का topic है ये. So this is impermanence, the state of the human body. शून्यता या emptiness क्या है? This is not a mark of existence, but it is related to the first 2 marks. This is anatta, non-self, and anicca, impermanence, taken one stage further. It is found in the Prajnaparamita Sutras, Mahayana Buddhist concept है शून्यता, and you will not find it in the strict or the original Theravada Buddhism. जब हम introduction to Mahayana Buddhism कराएंगे month 3 में, तब हम इसके विषय में थोड़ा सा बताएंगे. It states that every time you analyze something, like you did with the person or for anatta, you find that no object or thing has any inherent substance, that it is empty. कोई भी deep lasting value नहीं होती है उसमें. शून्यता का कुछ और मतलब भी है, that we are made up of skandhas, bundles of bits, और कोई भी named object है, it amounts to the sum of its parts. जैसे भिक्षुनी वजीरा ने कहा था, जब हम parts को देखते हैं correctly organized, तो हम सोचते हैं कि ये chariot है. उसी तरीके से हर ऑब्जेक्ट है. तो जो नेम्स हैं वो सिर्फ एक लेबल्स हैं, और जब हम एनालिसिस बहुत सूक्ष्म या बारीक या छोटा कर देते हैं, then we find that everything is empty. It has no existence of its own, which means that one thing is made up of another, second thing is made up of a third thing is made up of a fourth thing. तो ये endless है. तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो solid और unchanging है. For example, a car is made up of mechanical and electrical bits, which is made up of smaller and smaller components, made up of basic material, made up of atoms, made up of subatomic particles. अब ये particles तो हमें दिख नहीं रहे, लेकिन हम जानते हैं कि exist करते हैं, ये forces हैं. Therefore, we can say it is made up of nothingness. तो शून्यता के कई applications का meanings है जो बाद में study करेंगे. तो हमने अभी बुद्धिज्म में क्या देखा है? The human condition is marked by 3 marks of existence, the 4 noble truths. The first noble truth, that life is dukkha. The second noble truth, that dukkha is caused by tanha. We have seen the life of the Buddha. What are the goals? अपने कर्म को सही करना. The third noble truth, that you can stop dukkha by stopping tanha and nibbana. और इसके means क्या है? The 3 jewels, 3 ratna. Buddha, Dhamma, Sangha, the noble eightfold path, जो 4th noble truth से connected है, the 5 precepts, meditation and prayer. These are also called the 4 seals of Dhamma. All compounded things are impermanent, all emotions are painful, all phenomena are empty, they are without inherent existence. Nirvana is beyond extremes. Therefore, as I have said before, we have seen today the interconnection between Mahayana Buddhism, Vajrayan or Tibetan Buddhism, and Theravada Buddhism. It is all Buddhism. The historical Buddha, Sakyamuni Buddha, formalized all this. The 4 noble truths and the noble eightfold path, the Tilakan, the 3 marks of existence, characterize all 3 branches. So the 4 seals of Dharma, to the 3 universal characteristics, कुछ teachers ने एक 4th भी characteristic add की है, जिसको कहते हैं Nirvana. This describes the absolute state free of all dualism.
दुख है कि नहीं, परेशानी है कि नहीं, dualism नहीं है. It marks all things because relative phenomena are not separate from the complete peace of the absolute. हाँ, थोड़ी सी परेशानी अभी है लेकिन मोरलेस लाइफ ठीक है, ऐसा नहीं. जब हमें लगे कि कंप्लीट पीस है, एब्सोल्यूट पीस है, तो दैट इज निब्बान. So this is the noble eightfold path: seal, samadhi, panya, that we have already done. And you can see ये जो rainbow colored arrow ऊपर जा रही है, it goes to bodhi, which means enlightenment. So our next topic that we shall study in the next lecture will be bodhi or enlightenment. Buddhism states everything that arises also passes away. So strive for what is not arisen. Sadhu, sadhu, sadhu. Bhandeji, I've stopped sharing now. May I request Sister Sangamita and Bhandeji to continue the rest of the lecture? Nami Bhandeji, I welcome all the participants, the students of Fundamentals of Buddhism. I welcome Mr. Rajkumar Ambade, Lithun Chanda, Achal Singh, Savita Ramteke, Dharampal M, Amita Sharma, and a new one is here. I think his name is Hatun Ong Kwao. I think pronunciation may be wrong, but welcome, Brother Kwao. Then Majid Bauda is there, Arpana sister is there, and I hope all of you understood today's topic. It is a very important one. Banteji? Yes. Yes, please. So, your blessing to us, please. Okay, so do you have any questions to ask from Poonam? Bhandeji, you please take the questions, Venerable. I think, yeah. I'm only a student. Yeah, if you have any question, you can also ask from any of these instructors. We will try together. We are all learning. Okay. Well, maybe we can start with the Q&A session. Maybe one or two questions if you have to ask. Sangamita, Bandeji. do we have anyone joining from YouTube? I'll check them. Okay. Yeah. Aung Kyo, he's from actually Myanmar. So he just wanted to join, but maybe he is not so fluent in Hindi, but I hope he can also follow a little bit. There's no question on YouTube, Bhandeji. All right. So then with that, maybe we can conclude. Thank you everyone for joining, and so next Monday we will have another Quizlet test, so please be prepared. That will be about the concepts of Buddhism. I think I have already shared the link with you about that, so hopefully you can also enjoy. So just a little bit of homework will help you. Okay, थोड़ा सा homework करना चाहिए, तब आपको अच्छा लगेगा. With that we conclude. Thank you everyone for joining us today and with the fundamentals of Buddhism class. This class hopefully will be very helpful. So there is a question from Manjit. Now we have the Lord Buddha teachings. Us then why we don't get as taste of ultimate truth.
can within few years attain Nibbana. As long as the Dhamma is there, okay, as long as you practice, the world will not be empty of Arahanta persons. That means you have the Dhamma, yes, and you keep practicing. And the Arahanta persons, the liberated ones, will always be there. But remember, they will not come to the television, hey, I am Arahant. They will not even show themselves like Arahants. They will be very humble and very simple. Their ego is no more. Their attachments are no more. They are not interested in show off. So they will be very humble and very simple. And it's all about cutting off all the attachment. So yes, why not? Sometime if you see a homeless person or a beggar, don't underestimate them too. They might come to you in disguise. Sometimes it is said that even the devas come to you, like to testify your generosity, your kindness, your compassion. So make sure whenever you see them, pay them respect and also help them, and don't hesitate to practice your generosity and loving kindness. It's really important and very, very important to keep practicing loving kindness and to keep practicing generosity, because that way we can actually get rid of our attachment. We are attached to so many things in this world, right? We say, okay, this is me, this is myself, this is mine, and we are trying to build up our ego all the time. And sometimes we think this is our country, so we build our big ego. We have a big country. India is a big country. Or like USA is a big country. Or you can say it's a rich country. Or you can say you have your khandan is very important, your caste or whatever. You have a lot of money, or you have good education. You have so many degrees. And also maybe you can say, I'm a scholar, I'm a model, I'm an actor, I'm a professor. All these things actually build us. They are actually fooling us. We have to be really careful about that. These things always fool us. They will bring us back to samsara only. So to get rid of this is all what matters. And so much so we become simple and humble, and we become kind and compassionate and generous, and that way we can, yes, the Nibbana will not be so far away. Remember, Nibbana will not be attained after death. It will be attained only when you are alive right here, right now. And now we have a beautiful human life. Very important that you are not blind, you are not crippled, you are a complete human being. And you have the Dhamma right in front of you, and just in hand's length, just matter of practice. And a lot of people today, they see the Dhamma, they see the path, and they go there. It is right to the gate of the Dhamma, to the Nibbana, and they offer flowers and go back. They will U-turn actually. They will not take a first step going forward. And that's what is more important to us. So make sure you keep practicing. Make sure you learn the Dhamma. Make sure you are associated with the wonderful Kalyana Mitra friends. Make sure you listen to good Dhamma talks. That way Nibbana will not be far away. Yeah. Can anybody within 2 or 4 years attain Nibbana even if they practice meditation and Eightfold Path, good manners? If we all these things practice, we attain Nibbana. Yeah, it depends on actually. It depends on how good your practice is. Also your paramitas. You have done so much good in your samsara too. It's not so easy. Like if we say
can you leave everything and go to the temple? Can you become a monk? Leave everything behind? You will say, no, not right now. You will say, I have family, I have to do some exam, I have a promotion coming up next month, and there are like my children who I can leave everything, but not the children. There will be so many bonds you still have. And then you will say, okay, what is the most important thing, like the most precious things to you? Can you leave that? Yeah, it will be difficult. It will be challenging all the time, but nothing is difficult, nothing is impossible if we keep practicing. With that, I think Poonam is reminding that it's time for us to say goodbye to you for today, and thank you everyone for joining us. May you all be well, happy, healthy. We all learn together, we all practice together, and we all walk along this path. By the power of the Buddha, Dhamma, Sangha, may you all be well, happy, healthy, and safe. May all of you and your family, friends, relatives, teachers, elders, everyone in your community, everyone in your neighborhood, everyone in your country, everyone in the world be blessed by the noble triple gem. May they all be well, happy, healthy, and safe wherever they are. May all of us be associated with the Dhamma all the time. May all of us be associated with the wonderful Kalyana Mitra friends all the time until we attain the supreme bliss of Nibbana. May all these wonderful merits that we have accrued today and before during this lifetime by way of Dana, Sila, Bhavana, and all throughout our samsara, may all our departed ones share this merit and receive this merit, be well, happy, healthy, safe wherever they are. May all of them and may all of us, may all devas, all sentient beings be able to attain the supreme bliss of Nibbana, the absolute peace and happiness at the end of our samsara. Thinking thus, please keep your palms together close to your heart and say 3 times, Sadhu, Sadhu, Sadhu. Abhivadana silis nityang vaddha pachayino Chattaro dhamma vadhanti ayuvanno sukhang balang ayurarogya sampatti sagga sampatti mevacha ato nibbana sampatti eminate samijjhatu. Sadhu, sadhu, sadhu. I have an announcement for those who are interested in listening to a Dhamma talk tomorrow morning India time, and tonight here in New Jersey we will have a Dhamma talk about Four Noble Truths or Noble Eightfold Path, or the Dhamma for the lay people. Okay, hope you will be interested in joining us. So stay tuned with our Dhamma USA YouTube channel. Thank you. I'll be posting the link in the morning, so please keep an eye on it. Yes. Thank you very much, meritorious Upasakas and Upasikas, and we hope to see you again in the next lecture. Please send your questions and your problems to Venerable Sumit. We are now closing the Zoom program. Post them in the YouTube, I think, so that everyone will, because after this will be gone otherwise. Thank you.